Let us now go ahead and talk about the section 13.7. And this talks about general formula of inverse. I've already done this general formula of inverse in the last class itself. There is nothing new I can add. So A inverse will be 1 by determinant of A into adjoint of A. And if A is a singular matrix, determinant of A is equal to 0, then there is no inverse. Then there is no inverse. So let's take a question. Question बोलता है that you have a matrix A और ये matrix A जो है it is 2 3 4 4 3 1 1 2 4 and it says show A has inverse, and not only that but find the inverse of A. Show that A has inverse and find the inverse of A. तो पहले हम क्या करते हैं? To show A and has inverse, we just have to find the determinant of A. So it will be 2. 4 3s are 12 minus 2 10 minus 3 16 minus 1 15 plus 4 8 minus 3 5. So 20 minus 45 plus 20. 40 minus 45 minus 5, which is not equal to 0. Therefore, हम बोल सकते हैं that inverse of the matrix will actually go ahead and exist. The inverse of the matrix will exist. Now, what we can go ahead and we can do is that we can actually find the adjoint. So कोफैक्टर ऑफ 1 1 मतलब इनको हाइड करोगे तो 12 minus 2 10 and C1 2, that means first row and second column ko if I hide, so I will get 16 minus 1 15 and then C1 3, then C1 3 means first row third column, so 8 minus 3 5. C2 1, so C2 1 हो जाएगा second row first column, so 12 minus 8, 12 minus 8 हो गया 4, C2 2 हो जाएगा 8 minus 4 4, C2 3 हो जाएगा 4 minus 3 1, C3 1 will be third row first column gone, 3 minus 12, 3 minus 12 minus 11, C32 will be third row second column, 2 minus 16 minus 14, and C33 will be 6 minus 12, that means minus 6. तो आपको मिल जाएगा 10 15 5 4. So this is, देखो मेरे को I have to write the transpose ना, तो C11 C12 C13 इसका ट्रांसपोज निकालना होगा. सो आई राइट द मैट्रिक्स एंड देन फाइंड द ट्रांसपोज. तो मैट्रिक्स बन रहा है 4 4 1 minus 11 minus 14 minus 6. अब if I find the transpose of this matrix, so I'll get 10 15 5 5 4 4 1 minus 11 minus 14 minus 6. ये हो गया हमारा determinant of the matrix. एक बारी कैलकुलेशन देख लो. आई थिंक दिस इज, इसको देख लेते हैं. C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 minus 12, सॉरी 3 minus 12 will be minus 9. ये minus 9 होगा बेटा. हाँ, so now this will be minus 9 और ये भी minus 9 होगा. So 4 10 10 and C21 क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देख लेते हैं. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम will be 12 minus 8 4, and second row second column 8 minus 4 4. ठीक है. ओके, सो 10 15 5. अच्छा बेटा ये ना हमारे माइनर्स हैं. सो सॉरी.
दीज आर माई माइनर्स, अभी कोफैक्टर्स तो हमने निकाले ही नहीं है. दीज आर माई माइनर्स. कोफैक्टर्स के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई देम विद अ साइन ऑल्सो ना. दीज आर माई माइनर्स. कोफैक्टर्स के लिए वी विल मल्टीप्लाई देम विद अ साइन. तो 1 1 है तो प्लस रहेगा. 1 + 2 3 होता है, सो माइनस हो जाएगा. 1 + 3 4 होता है तो प्लस रहेगा. 2 + 1 3 होता है, माइनस हो जाएगा. 2 + 2 पॉजिटिव रहेगा. 2 + 3 5 होता है तो माइनस हो जाएगा. 3 + 1 4 होता है तो प्लस. राइट. दिस इज 3 + 2 5 होता है तो एक माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड 3 + 3, सो इट विल रिमेन, साइन विल रिमेन अनचेंज्ड. सो जब हम ये कर देंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड टू कोफैक्टर. देन इट विल बी कन्वर्टेड टू कोफैक्टर. आर यू अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या किया है? सो जब हमने, अभी तो हमने सिर्फ माइनस निकाले थे. Minor was nothing, but जैसे अगर first row first column का if I have to take the minor, so first row and first column will be gone. So I will be left up with this and I can find the minor of this, right? Similarly, if I have to find for first row second column, so first row and second column will be there. I can just leave first row and second column and I can find the minor of remaining. So minor will be 16 minus 1, that means 15. But when I have to convert this minor to cofactor, so M12 to convert this into C12, because ये odd हो रहा है, 1 + 2 is odd, so I will multiply this with -1. So when I multiply this with -1, ये -15 बन जाएगा and so on and so forth. Then I will get the cofactors. So cofactors वाला जो matrix बनेगा now, it is going to be 10 -15 +5 -4 4 -1 -9 -4 +14 -6. This will be the matrix of cofactors. अब इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे, so 10 -15 5 -4 4 -1 -9 +14 and -6. ठीक है. And then it will be multiplied with the determinant का reciprocal. So ultimately the answer you will be getting will be -1/5, 10 -4 -9, -15 4 14, 5 -1 -6. This will be A inverse. Okay.